forget to like, share and subscribe. Hello students, today we are going to discuss graph of exponential and logarithmic function. First, exponential function. A real valued function f from r to r is said to be exponential function if fx equal to e to the power x for every x belong to r. What is e to the power x? Expansion of e to the power x is e to the power x equal to 1 plus x upon factorial 1 plus x square upon factorial 2 plus x cube upon factorial 3 plus dot 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 up to infinity. Now putting x equal to 1. So e to the power 1 means e is equal to 1 plus 1 upon factorial 1 plus 1 upon factorial 2 plus 1 upon factorial 3 plus dot 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 up to infinity. अब व्हाट इज फैक्टोरियल? एक्चुअली जो फैक्टोरियल नोटेशन हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे ड्यूरिंग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू देता हूँ. फैक्टोरियल 3 मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर. फैक्टोरियल 3 मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर. फैक्टोरियल 2 मीन्स product of first 2 natural number. If factorial 10 means product of first 10 natural number, means 1 into 2 into 3 into dash 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 up to 10. So now simplify this. When we simplify, value of first term is 1, second term 1 upon factorial 1 1 plus 1 upon 2 means 0.5, 1 upon 6 and up to infinity. Or when we add all the terms, then value is 2.718 dot 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 up to infinity. This is irrational number. अब now graph of e to the power x. Draw x and y axis. Y axis, x axis, this is negative y axis and this is negative x axis. A function is y equal to e to the power x. फर्स्ट एक एनी पॉइंट जो आप आसानी से निकाल सकते हैं. एट x इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ y इज e to the power 0 means 1. So one of the point is 0, 1. Means this curve passes through point 0, 1. Now put x equal to 1. Then y equal to e. E means 2.718. Very close to 3. Means we get 1, 3. 1, 3. थोड़ा सा उससे कम. When we take x equal to 2, then we get 2.718 raised to the power 2 means value is y equal to e square. So square of 3 near about 9. यानी कंटिन्यू करो क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा in this way. What happened when we take negative values? X equal to -1, then y equal to e to the power -1 is equal to 1 upon e. 1 upon e means 1 upon 2.718 something. अब 1 upon 3 means 0.33 something. तो -1 पे क्या आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा. देन वी टेक -2 और स्मॉल नंबर आएगा 2.718 होल स्क्वायर. तो ये बिल्कुल टच करेगा इसको, अप टू इन्फिनिटी जाके टच करेगा नेगेटिव एक्स एक्सिस को. तो कर्व इस तरह से बनेगा इसका. सो दिस इज ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स. अब फ्रॉम द ग्राफ टेल मी योर ऑब्जर्वेशन. ऑल द पॉइंट्स लाइज अबव एक्स एक्सिस. In first and second quadrant, y is always greater than 0. Means fx equal to
e to the power x is always greater than 0 for every x belong to real number. Means range of exponential function is 0 to infinity. Range f equal to 0 to infinity. And domain any number fx equal to e to the power x. So domain is set of real number. Graph of logarithmic function. Let y equal to log x. Base a implies now convert into exponent. तो हम किसको चेंज करते हैं? बेस अपनी जगह रहेगा, सिर्फ x और y इंटरचेंज होंगे, यानी x इक्वल टू a टू दी पावर y. अब नाउ ड्रॉ ग्राफ ऑफ x इक्वल टू a टू दी पावर y in two different situations. Case first, a is greater than 1, and case 2, a is greater than 0 and less than 1. We know a not equal to 1, base is not equal to 1. अब now case first, a is greater than 1. Let us consider a equal to 2. a equal to 2. So we get x equal to 2 to the power y. Let us consider a equal to 2. अब now draw graph of this. This is y axis, this is x axis. First take a general point, कोई भी पॉइंट जो आसानी से आपको मिल रहा है. At y equal to 0. At y equal to 0. x equal to 2 raised to the power 0 1. So one of the point is 1 comma 0. So this curve passes through point 1 comma 0. Now take y equal to 1. Then x equal to 2 raised to the power 1 means 2. So next point is 2 comma 1. 2 comma 1. Next point y equal to 2. Then we get x equal to 2 to the power 2 4 means 4 comma 2 3 4 comma 2. When we join इस तरह से कर्व मिलेगा आपको up to infinity. When we reduce the values, y equal to -1, then x equal to 2 raised to the power -1 means 1 by 2, यानी 0.5 वैल्यू कितनी आ रही है? -1. और ये चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी. और नेगेटिव वाई एक्सिस को कहाँ टच करेगा? एट इन्फिनिटी पे जाकर टच करेगा, यहाँ पे नहीं करेगा, अप टू इन्फिनिटी. अब क्लियरली वैल्यू ऑफ log x, domain of log x is greater than 0, and you can verify also from the graph. In first and fourth quadrant value of x is positive. Now case second, when a lies between 0 and 1, let us consider a equal to 1 by 2. Means we have to draw graph of x equal to 1 by 2 raised to the power y. 1 by 2 means 2 raised to the power -1 means 2 raised to the power -y. Again take few points. At y equal to 0, x equal to 1. So this curve also passes through point 1 comma 0. Now take y equal to 1. Then corresponding value of x is 2 raised to power -1 means 1 by 2 means 0.5. So next point is 0.5 comma 1. 0.5 and 1. Y equal to 2. Then x equal to 2 raised to power -2 means 1 by 4 means 0.25. When x equal to 0.25 value of y is 2. इस बार कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है और इन्फिनिटी पे जाके क्या होगा? When y tends to infinity then curve tends to
curve touches positive y-axis up to infinity. Now similarly y equal to -1, 2 raised to power minus minus 1, 2 raised to power 1 means 2. So x equal to 2, y equal to -1, x equal to 2 and y equal to -1. So in this way curve extend. So this is graph of y equal to log x when a is lies between 0 and 1. Again see, in first and fourth quadrant x is positive. So domain of logarithmic function is 0 to infinity. Now very important remark. This is graph of x equal to 2 to the power y, but a is greater than 1, so we can take any value of a. यानी आप कोई भी लोगे a की मोर देन 1, ग्राफ बिल्कुल उसका उसी शेप में आएगा, बस थोड़ी सी पोजीशन चेंज होगी. मान लो आपने यहाँ पे 3 ले लिया, देन थोड़ा सा ऊपर बन जाएगा, यहाँ पे इधर नीचे आ जाएगा, पर बनेगा वही शेप बनेगा. तो इस जनरल डायग्राम. सिमिलरली इफ यू टेक एनी पॉइंट बिटवीन 0 एंड 1, ग्राफ रिमेन सेम, उसी पैटर्न में बनेगा. रिमार्क्स. नंबर 1, log x base c we can also write ln x means natural log. Remark number 2, if log m base a is greater than n, implies m is greater than a raised to the power n. प्रॉपर्टी ऑफ log, डेफिनेशन ऑफ log, बेस अपनी जगह रहेगा, सिर्फ ये इंटरचेंज होंगे. तो m इज ग्रेटर देन a raised to power n. इफ a is greater than 1, but if a is greater than 0 and less than 1, in that case अगर ग्रेटर देन का साइन है क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा, m इज लेस देन a टू द पावर n. एंड सेम रिजल्ट फॉर इफ log m base a is less than n, implies m is less than a to the power n or m is greater than a to the power n if a is greater than 1, if 0 is less than a less than 1. जस्ट कंपेयर करो, ग्रेटर देन में ग्रेटर देन साइन ही है इफ a इज ग्रेटर देन 1, लेस देन में लेस देन का ही साइन है इफ a इज ग्रेटर देन 1. बट इफ a लाइज बिटवीन 0 एंड 1, अगर ग्रेटर देन का साइन है तो क्या आएगा लेस देन, और लेस देन है तो क्या आएगा ग्रेटर देन. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.